Do you feel like you don't speak enough Hindi? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hi! Welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia.
And I'm joined by... Hi everyone, I'm Venus. In this series, you will learn everything you need to know to get started learning Hindi. That's right, and we're here to help guide you through your journey. In this lesson, you'll learn the reasons why you should start learning a new language, why you should specifically learn Hindi, and how to get started. There are countless reasons, but perhaps the biggest one of all is that it could actually change your life. Learning a new language unlocks new pathways that are off limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language. Like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and earn a living, or better yet, build a career from it, instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never have even considered going. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open-minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Studies have consistently shown that those who study another language have improved memory as opposed to those who didn't. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can mean as much as 4 to 5 more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn Hindi in particular? If your next holiday destination is India, learning a little bit of Hindi can be quite handy. Yes, Hindi is the main language of India, and if you're planning to travel to the country for pleasure or business purposes, a little bit of knowledge of the language can help make things easier for you. India is a country known for its wildlife, its art, its monuments, and its rich culture and traditions. And don't forget the delicious food. Yes, you can enjoy a variety of cuisines as you travel from one region to another. And don't assume that just because India has a large number of English speakers, you will be able to move around in the country with no knowledge of Hindi. You're absolutely right. Recent surveys have indicated that India has the second largest number of English speakers in the world, second to only the United States of America. But the percentage of English speakers is still quite low, at just 12%. This means while you'll encounter many people who can easily have a conversation with you in English, you will require some knowledge of Hindi while taking a taxi or an auto rickshaw or a bus. The knowledge of Hindi will also help you when you want to bargain and get the best possible price for the gorgeous saris and stoles or the beautiful artifacts. It could also help you handle an emergency situation easily. Definitely. Hopefully you won't have an emergency, but it is always a good idea to be prepared. If you know the language, you'll be able to interact more easily with the locals. Indians open their hearts and their homes to every visitor. Atithi Devo Bhava. That means guests are like God, and large-hearted Indians are known to welcome every guest with delicious foods and drinks, and so much love that you can't help but leave their homes with an experience to remember for a lifetime. So if India attracts you, get started by learning Hindi. But how can you actually do that? It is best to start with a few Hindi words and then build up from there. To begin with, there are many English words that are commonly used in India and by Hindi-speaking natives. Yes, for example, you will see the people are likely to use the English please rather than the Hindi kripya in spoken language. Yes, but in written language, the Hindi word is used and not the English word. But we don't have to worry about the written script as of now. To begin with, we will be using romanization to learn a few Hindi words. Can you give us more examples of English words that are commonly used and understood in Hindi-speaking areas of India? Yes, natives will easily understand a thank you or a good boy or a good morning and good evening. Or even a train or a bus.
or even an office or computer, or help or welcome. So that makes things a lot easier for a traveler. But let's get started with some Hindi words that you can easily learn. Let's begin with a greeting. Sure, like we said, you could easily say a hello, but you will love the smile on your host's face when you greet them with folded hands and say namaste. Namaste. Now you try. Fold your hands and say namaste. Namaste. You can also use namaste to say goodbye. Oh, that's so useful. What about thank you in Hindi? You say dhanyavad. Dhanyavad. Now you try. Dhanyavad. Dhanyavad. So, how about we do a summary of the 3 words we learned in Hindi? Hello is namaste. Thank you is dhanyavad. And goodbye is namaste. We also learned the Hindi word for please, although we may not use it while speaking the language. Please is kripya. We learned a lot of things about India and Hindi in this lesson. We learned how learning a new language can help you expand your horizons and meet new people. It can help make travel and business easier for you when in India. We also learned that there are a few English words we can use with the natives too. Of course, we also learned how to say hello and thank you in Hindi. We also learned the Hindi word for please, although we know that we should be using the Hindi word for please only in written language and not in spoken language. In the next lesson, we're going to learn a few things about Hindi pronunciation, so don't forget to join us. See you in the next lesson. Bye! Dhanyavad and namaste. Hi! Welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I am Venus. In this lesson, you'll learn the basics of Hindi pronunciation. Just like English, Hindi also has consonants and vowels. Hindi has 33 main consonants and 11 vowels. If you learn the sounds of these consonants and vowels, you'll be able to pronounce every single word in Hindi. There are also 2 additional consonants and 2 additional vowels, as well as few conjuncts, but you don't have to worry about them right now. Yes, because once you're comfortable with the 33 main consonants and the 11 vowels, the rest will come pretty easily. It may seem like a difficult task, but actually you already know many of these sounds in English. So, how about we first take a look at some of the consonants in Hindi? Yes, let's begin with some unaspirated consonants along with their aspirated counterparts. We won't be working on the consonants in the order they occur in the Hindi alphabet system simply because some of them are more commonly used than others. We'll take a look at these in order when we get to the lesson on writing. Hindi consonants are known as Vyanjan. Yes, you're already familiar with many of them because the sounds already exist in English or are quite similar to certain sounds in English. For example, the first consonant in Hindi is K, which is similar to the English letter K. But the next one doesn't exist in English. Yes, this one is K. When you say it without aspiration, you get K. But when you say it with aspiration, it becomes K. Interesting. But let me first explain what aspirated and unaspirated sounds are. In very simple words, we can say that aspirated sounds are spoken with a burst of air, and an unaspirated sound isn't. For example, the sound of the letter H in the English word hat. Saying this sound involves a forceful expulsion of air. Try it yourself. Ha. Ha. In Hindi, when you say K, there is no forceful expulsion of air. But when you say K, you will feel yourself expelling the air from your mouth. Try it yourself and see the difference. K, K. Next,
let's take a look at G, which is the same as the sound of the letter G in the English word game. Yes, when you say G without aspiration, you get G, but when you say it with aspiration, you get G. Yes, that's the next consonant. It works the same way for some other consonants too. Yes, like ch is the same as the ch in the English word chain without aspiration. When you say ch with aspiration, it becomes ch. Similarly, we have j and jh, t and th, d and dh, t and th, d and dh, p and p, b and bh. But what about the other consonants? Definitely, that doesn't complete our list of consonant sounds. Now, let's take a look at some of the other consonants and how they sound. Let's first take a look at the consonant h. It sounds like the letter H in the English word hug. We also have y, which is like the sound of the letter Y in the English word yak. There are two letters that sound like the SH in the English word share. Yes, these are sh and sh. They sound the same when spoken. We will use the small letter s to denote them both from now on. We also have a sound that is similar to the English letter s, like in the word sun. This is s. This one is s, and we will use the capital S from now on when we refer to it. Okay, what's next? We also have n. N is just the sound of the English letter N. R is the same as the sound of the letter R in rat. L is the same as the sound of the letter L in lamb. M is the same as the sound of the letter M in marsh. V is the same as the sound of the letter W in work. Are there any other consonants in Hindi that we haven't discussed? We also have ण. This may seem to be a difficult sound as it doesn't exist in English. Just try saying n, but roll back your tongue slightly. ण. But aren't we still missing two consonants? Yes, we are. We also have n and n, but we don't have to worry much about them since they aren't used alone ever. So now that we've taken a look at the consonants, how about we take a quick look at the vowels too? The Hindi vowels are known as swar. There are 11 main vowels in Hindi, and most of them are the same as in English. For example, a is like the sound of the letter A in the English word apply. A is like the sound of the letter A in the word father. E is like the letter I in tin. E is like the letters E in C. Then we have U, which is like the letter U in put. And U is like the sound of the letters O in room. A is like the A in May. A is like the sound of the letter A in hat. We also have O and O. O sounds like the O in box, and O sounds like the letters AW in sa. We also have another vowel which is Ri, something like the RI in riddle. We actually learned a word in the last lesson which uses Ri, kripaya, which means please. Indeed! So, how are vowels used in Hindi? Hindi vowels can be used alone or in the form of a matra or vowel signs where it modifies a consonant. A good example where both the forms can be used in a single word is the Hindi word acha, meaning good
or okay. Acha. A. The first letter A is a standalone form of the vowel A. Cha. But if you see the matra at the end, after the letter ch, the vowel A here is modifying the consonant ch. This means that the sound now becomes ch plus a, cha. Let's see how the vowels modify the consonant k. It can become ka, ki, ku, ku, ke, ko. That's a lot that we learned about the sounds in Hindi. It may seem as too much to learn in the beginning, but as you continue to practice, things will get easier. True. The best thing to do is practice, practice, and practice. In this lesson, we learned that in Hindi there are 33 consonants and 11 vowels. Consonants are called vyanjan in Hindi and vowels are called swar. The vowels have a standalone version, and when they're attached to a consonant, they modify its sound. So, in the word acha, the first a is a standalone form of the vowel a, but the last vowel a appears in the form of a modifier and turns ch into cha. Among the consonants, we realized that there are forms that are already present in English. When we say these consonants without aspiration, we get one consonant. When we say them with aspiration, we get another consonant, which generally doesn't exist in English. For example, k is a consonant, and when we say it with aspiration, it becomes another consonant kh. We just learned the basics of pronunciation in Hindi in this lesson, and in the next lesson, we'll learn the basics of Hindi grammar. See you in the next lesson. Bye! Dhanyawad and namaste. Hi! Welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Venus. In this lesson, you'll learn the basics of Hindi grammar. Did you know that Hindi doesn't use articles? Really? That means you don't have to worry about where to put a, and where to add an, and where to use the? Yes. Doesn't that make things easier? It definitely does. What about gender? How is it indicated in Hindi? Firstly, there is no he or she in Hindi. You can use the same pronoun for both genders. Great! But the verbs do change depending on the gender of the person speaking and the gender of the person you are speaking to. Oh, that is quite complicated. Not really. It is usually quite simple. If a verb uses e at the end, it means it is feminine. But if it uses a at the end, it means it is masculine. We will go through a few examples later in this lesson to find out just how easy it is. Also, in Hindi, there is no neutral gender. Every object is either masculine or feminine. Yes, so an auto rickshaw is masculine and a bus is feminine. But there isn't a need to worry about getting the gender of all objects correct in the beginning. This is something you'll catch on to as you go on learning Hindi. How about we look at an example of verbs and how they change based on gender? Let's begin with the verb to do. Sure. In Hindi, to do is karna. If you are female, you would say karti. And if you are male, you would say karta. So, the last vowel changes. It is E for females and A for males. Yes, the same goes when you address someone. If they are female, use E at the end of the verb. And if they are male, use A at the end. Okay, so we don't have to worry about articles, we don't have to worry about pronouns being gender-based, but we have to be concerned about verbs being based on gender? Yes, that's right. How about we go on and take a look at some personal pronouns now?
In Hindi, the first person singular pronoun is main. And it doesn't matter whether you're female or male. You can use the same pronoun. Yes, the first person plural pronoun is hum. While there's only one first-person singular pronoun in Hindi, there are 3 second-person singular pronouns, right? Yes, they are tu, tum and aap. Tu is used in a very informal way, something you will use with a very close friend. Tum is also informal, but not as much as tu. It is something you may want to use with a friend, a close colleague, your kids, your siblings, or even your spouse. But aap is the formal form of address. It is something that you would like to use at your office while addressing your parents, strangers, or your elders. The interesting thing is that you can use tum and aap as the second person plural too. But generally, a word like all or people is added to tum and aap to make the second person plural. So, you could say tum log or aap log, where log means people. Or you could say tum sab or aap sab, where sab means all. Good. So we learned 2 more words here, for people and all. Yes, log means people and sab means all. Let's check the third person singular now. For he, she, it, this, we use ye. And for he, she, it, that, we use veh. The plural will be ye for these and veh for those. So, how about we try and make some sentences now? Sure, we can. But before we actually go on to forming sentences, we will need to know a little more about the various forms of the verb to be. Of course, to be is an important verb not only in Hindi but also in English. Without knowing about how to use it, it's very difficult to form sentences. Imagine having no am, are, were, was, have, or has in English. There would be no sentences. So, what is to be in Hindi? It is hona. How would we say I am in Hindi? For I am, hona changes to hu. मैं हूँ. We are becomes हम. हम हैं. Where होना changes to हैं. With तुम you use हैं. And तुम you use हो. And with आप you use है. That means the to be form is the same for plural and for respectful address. Yes, it is हैं. Does it change depending on whether a man speaks or a woman? No, it doesn't. We have 3 versions of होना. And these are हूँ, हैं, हैं. Great! So now we can make a sentence. Definitely. How would you say, I am Alicia? That would be मैं अलीशा हूँ. So, the order of the words is I, Alicia, am, or pronoun, noun, verb. That means, unlike English, the noun comes before the verb in Hindi. Yes, indeed. Let's try out a few more sentences. How about, I am good? How would we say that in Hindi? मैं अच्छा हूँ if you are male. मैं अच्छी हूँ if you are female. Did you notice how for males the word good becomes अच्छा and for females it becomes अच्छी? Yes, indeed. What about the plural version of the Hindi word for good? That would be अच्छे. This would also be used if you are using a respectful address for a male. आप अच्छे हैं. Generally, the respectful form when addressing males is the same as the plural version. That makes things quite simple. But good is an adjective. Does that mean that all adjectives also change depending on the gender? Not always, but sometimes they do. You will pick this up as you practice the language more and more. Okay, but what about past tense?
was becomes tha or the or thi. So, how would you say, how are you? आप कैसे हैं और आप कैसी हैं. And how would you answer that? मैं अच्छा हूँ if you are male और मैं अच्छी हूँ if you are female. Wow, we learned a lot about Hindi grammar today. Let's recap what we've learned in this lesson. In this lesson, we learned that there are no articles in Hindi. The pronouns are not gender-based, but the verbs are never neutral. They're always masculine or feminine. We also learned that you can use 3 variations of the word you, depending on whether you want to use a formal, informal, or a little more informal version. We also learned how the verb to be changes depending on whether the sentence is singular, plural, formal, or informal. And of course, we also learned how to say, how are you? And how to answer this very important question. We just learned the basics of Hindi grammar. In the next lesson, we'll learn the basics of Hindi writing. See you in the next lesson. Bye! धन्यवाद and namaste. Hi! Welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Venus. In this lesson, you'll learn the basics of Hindi writing. To begin with, Hindi is written in Devanagari script. Is it written from right to left or left to right? Hindi is written from left to right, just like English. There is another interesting thing about Hindi, which is different from English. What is that? Hindi is a phonetic language. This means that it is written as it is spoken. In English, some of the spellings can be quite confusing for a learner. For example, the sound of the letter C in city is the same as the sound of the letter S in sit. At the same time, the sound of the letter C in city is different from the sound of the letter C in cup. For someone who knows English, this isn't a difficult thing. But if you're learning the language, this can be confusing indeed while reading and writing. But in Hindi, you don't have to worry about these things. If the sound is ka, you write k. If the sound is ku, you write ku. This makes it quite easy to learn the script, doesn't it? Yes, once you know the consonant and vowels, you can easily begin to read the script. What about the punctuation marks? Are they different from English? In Hindi, we use the same punctuation marks as in English. This means you use the same commas and question marks, so nothing to worry about. However, the Hindi full stop is different from the English full stop. Really? How do we make the Hindi full stop? It appears like a vertical or standing line at the end of the sentence and is called a Purna Viram. Take this sentence, for example, written in Hindi script, मैं ठीक हूँ. Notice the vertical line at the end of the sentence. This is the Hindi full stop. This one seems quite easy to make too. Yes, indeed. So, how about we go on to how the Hindi alphabets are written? In a previous lesson, we learned that Hindi has 33 consonants and 11 vowels. You are absolutely correct. And we also learned most of the consonants during our pronunciation lesson. How about we take a quick look at them and then go on to see how vowels modify the sounds of these consonants? Sure. Here they are. K, K, G, Gh, N, Ch, Ch, J, Jh, N, T, Th, D, D, N, T, Th, D, Th, N, P, P, B, B, M, Y, R, L, V, Sh, Ksh, S, H. Okay, great. The best way to learn the script is to practice reading and writing it as much as you can. Yes, indeed. So,
How do vowels generally appear in Hindi script? Let's start with how they are written individually. Here they are. A, A, I, U, U, E, O, O, Ri. How do they appear when they're attached to a consonant? Let's take a few words that use these vowels in the form of matras. Work, calm. See the vertical line between the letters K and M. This is the vowel A and is called A ki matra or matra of A. Whenever you notice this vertical line added to a consonant, you add the vowel A to that consonant. So, K becomes Ka. Let's try another. How much? Kitna? See this matra on the letter K? That is called choti I ki matra or I or matra of the small I. Whenever you see this matra on a consonant, add the vowel sound to the consonant and say it. So, K becomes Ki. Let's look at another word. Cat, Billy. See this matra on the letter L? This is called the badi I ki matra or E or matra of the big E. Here, L becomes Li. Here's another word. Dog, Kutta. Notice this matra on the letter K. This is the choti U ki matra or U or matra of the small U. This matra makes K, Ku. Let's now look at shoe, Juta. This matra below the letter J is the badi U ki matra or U or matra of the big U. This matra makes J, Ju. Now let's take apple, seb. The matra above the letter S is called the choti A ki matra or A or matra of the small A. This matra changes S to Se. Let's now take the word for money. Money, paisa. The matra above the letter P is called the badi A ki matra or A or matra of the big A. This changes P to Pa. Now, let's take a look at O and Au. Gold, Sona. The matra on the letter S is called the chote O ki matra or O or matra of the small O. This matra changes S to So. Who, Kon. The matra on the letter K is called the badi U ki matra or O or matra of the big O. This matra modifies the sound of K to Ko. The vowel Ri appears slightly differently. Let's take a word we learnt in the first lesson. Please, Kripaya. This matra below the letter K is called the Ri ki matra or the matra of Ri. What else is there that we should know about the Hindi script? There are two more things you will often notice in the Hindi script, and that's called the Anuswar and the Chandra Bindu. What does that look like? The Anuswar appears as a dot, and the Chandra Bindu is the moon dot. Notice the small dot along with the vowel A in ma or I. This is the Anuswar, and when it occurs at the end of the word, it nasalizes the vowel. When the dot appears before a letter in the middle of the word, it nasalizes the sound of that consonant. Let's check out the word for color, rang. Here the Anuswar makes it sound like the NG in the English word song. The Chandra Bindu is no different than the Anuswar, and it works very similarly to it by nasalizing the vowel above which it is placed. For example, clocks.
घड़ियाँ. Here, the Chandrabindu can be seen above the last vowel A. In this lesson, we learned how the Hindi full stop appears, and we also came to know that Hindi is a phonetic language and is spoken exactly as it's written. That makes things quite easy. We also learned how the consonants look and how the vowels look individually when they're attached to a consonant, and how their nasalized versions appear in written Hindi. We just learned the basics of Hindi writing. In the next lesson, we'll teach you some basic phrases in Hindi. See you in the next lesson. Bye! धन्यवाद and namaste. Hi, welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I am Venus. In this lesson, we'll focus on teaching you the most useful Hindi words and phrases for absolute beginners. Make sure you are repeating the words out loud after I say the examples. Are you ready? Let's get started. The best phrase to learn when studying a new language is one that expresses gratitude and appreciation. If you had to learn only a single phrase, this would be it. We taught you this phrase in the first lesson of this series. Do you remember what it was? It's... Dhanyavad. Repeat it. Dhanyavad. Once more. Dhanyavad. Okay, but how about if we want to say, thank you very much? Then you would say, Aapka बहुत धन्यवाद. Let me break this down for you. Aapka, here. बहुत, very. धन्यवाद, thanks. आपका बहुत धन्यवाद. You can even say आपका बहुत बहुत धन्यवाद. The next phrase we'll teach you is perhaps the second most useful phrase of all. It's to apologize or excuse yourself. Firstly, Indians often use the English word sorry in their spoken language. That's quite a useful bit of information for someone who's traveling to India. Yes, indeed. So, you can easily use that word too. But here is the Hindi version of sorry. Maaf karna. Maaf karna. You can use this phrase to apologize as well as to excuse yourself. Add the word mujhe and you will get I am sorry. Repeat after Venus. Mujhe maaf karna. Once more. Mujhe maaf karna. Try again. Mujhe maaf karna. That was quite easy, wasn't it? Let's try both phrases once more. Thank you very much. आपका बहुत धन्यवाद. आपका बहुत धन्यवाद. Thank you very very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, now let's try I'm sorry. For sorry, we use the word माफ करना. माफ करना. माफ करना. मुझे माफ करना. मुझे माफ करना. Now you can say thank you very much, excuse me, and I'm sorry in Hindi. Let's move on. Asking where something is an incredibly important and useful phrase to learn. You're going to need this when asking where the bathroom, the train station, or where the hotel is. But first, let's find out what the Hindi word for where is. The Hindi word for where is kahan. Kahan. How would we say, where is the bathroom in Hindi? We would say, bathroom kahan hai. You use the English word for bathroom. Yes, indeed. That's because Indians often use the English word. But you could also learn the Hindi word for bathroom, which is शौचालय. Let's try this again. बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? शौचालय कहाँ है? शौचालय कहाँ है? If you notice, the sequence of words here is bathroom, bathroom, where, कहाँ, is, है.
Does that sequence work with most things? For example, asking for the bus or train station? Yes, just put what you are looking for first, follow it up with kahan, and then add hai. Okay, let's try this again. Bathroom kahan hai? Bathroom kahan hai? How about we learn some of the common words you may need to ask for while moving around in India? Well, let me first tell you about the English words you can easily use. That would be great. Hotel, train station, bus stop, taxi, metro station, museum. How would you say shop? Shop is also commonly understood by Indians, but you could ask for dukan. For example, if you want to ask for a pharmacy, or more commonly known as a chemist shop in India, you could say दवाई की दुकान कहाँ है? How about we try that again? दवा की दुकान कहाँ है? Once more. दवा की दुकान कहाँ है? In this lesson, you learned how to say thank you very much, sorry, and I'm sorry. You also learned how to ask where something is. Throughout this Hindi Introduction Guide series, you learn about the alphabets, the script, the basics of Hindi grammar and pronunciation. Let's conclude with some parting advice from Venus and listen to some of her tips on how to learn Hindi from a native Hindi perspective. Whenever you learn a new language, the best way to get better at it is to practice and practice. This applies to Hindi too. One of the best ways to learn spoken Hindi is to watch Hindi movies and TV shows. This helps you learn Hindi words and sentences quickly and easily. Practice pronouncing some of the easier words first, and then you can go on to some of the difficult words as well. Learn to read Hindi by spending time studying some newspapers or magazines written in the language. If you spend just an hour a day or even 30 minutes a day learning Hindi, within a month you can become quite fluent in it. Good luck as you continue learning Hindi, and we'll see you in another video. Bye! Dhanyavad and Namaste. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Hindi. There are only 2 sentences you need to know. Namaste, मेरा नाम प्रेरणा है. आपसे मिलकर खुशी हुई. Hi, my name is Prerna. Nice to meet you. Start by saying Namaste. Then say मेरा नाम, then your name, and then say है. Please repeat after me. Namaste. मेरा नाम प्रेरणा है. Finally, say आप से मिलकर खुशी हुई. Together we have Namaste. मेरा नाम प्रेरणा है. आपसे मिलकर खुशी हुई. Let's take a closer look at the first sentence. The first word is Namaste. Namaste in Hindi is equivalent to hello, which can be used at any time of the day. Next is mera. The word mera means my. This is a way to refer to yourself, which can be used by both men and women. Next, we have naam. The word naam means name. Then you say your name. And finally, we have hai. Hai is attached to the end of the sentence and literally means to exist. In the first sentence, we have the construction mera plus naam plus your name plus hai. The structure of simple Hindi sentences is different from English. In Hindi, the word order is subject, object, verb. The second sentence we have is आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई can be used by both men and women. It means nice to meet you. It's used when meeting someone for the first time. आप से मिलकर खुशी हुई. आप से मिलकर खुशी हुई. Now it's time for Prerna's points. Indian people don't generally shake hands. You're better off using the Namaste gesture. However, in a business situation,
you might want to use a handshake. Shaking hands is more common in big cities where Western customs are more familiar. नमस्ते, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम मेघा है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। आशा जी, आपका नाम अच्छा है। शुक्रिया। कमला जी, आप कैसी है? अरे महिमा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, धन्यवाद। आपका बेटा कैसा है? वो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। In this lesson, we're going to learn how to use good manners when we thank people. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? तो चलिए शुरू करें. So let's begin. There are several ways to thank someone, but let's start with the easiest. It's just one word. Dhanyavad. Dhanyavad. Dhanyavad means thank you. You can emphasize dhanyavad by adding bahut, which means very much. So it becomes bahut dhanyavad. Bahut dhanyavad. In Hindi, there are other ways to express one's gratitude. Dhanyavad comes from Sanskrit and it sounds quite formal. That's why some people prefer to use Urdu expressions, which are felt to be more colloquial. A more colloquial expression for thank you in Hindi is shukriya. Shukriya can also be preceded by bahut, which means very much. Bahut shukriya. Bahut shukriya. So now you have learned how to say thank you in Hindi. But how will you reply if someone else says thank you to you? In Hindi, your welcome is sometimes expressed as swagat hai. The expression swagat hai means welcome. Swagat hai. You can also respond to someone who has thanked you by using another expression. This is koi baat nahi, which literally means it's nothing. Koi baat nahi. So, when someone says dhanyavad to you, you can simply reply with swagat hai or koi baat nahi. Now it's time for Prerna's points. Just as with the expressions for thank you and please, Indians do not always use you're welcome in everyday situations. It's a concept literally translated from English. Native speakers often show politeness simply by using polite pronouns and verb forms while speaking. आप शाकाहारी हैं? नहीं, मैं शाकाहारी नहीं हूँ। तो आप मांसाहारी हैं? जी हाँ, लेकिन मैं सिर्फ गोमांस नहीं खाती हूँ। आपकी कितनी बिल्लियाँ हैं? मेरी एक बिल्ली है। और कितने कुत्ते हैं? 2। आपकी उम्र क्या है? मैं 30 साल की हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in India. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? तो चलिए शुरू करें. So, let's begin. Let's start with a greeting you're sure to have heard before. Namaste. This is a word that is so closely associated with India and Indian culture that it has become famous all over the world. Namaste. Namaste. The word namaste is made out of two Sanskrit words, nama and te, which have been joined to mean I salute you. We use namaste as a formal as well as a friendly greeting. It's used when people meet at any time of the day, morning, noon, or evening. A slightly more formal variation on namaste, which you may or may not have heard before, is namaskar. Namaskar. Use this and you'll surely impress your Indian friends. In Hindi, using different greetings for each time of the day is not very common. When talking with friends, we usually just use the English phrases. But there are equivalent Hindi versions. They're just not used that often. If you meet someone before noon, you can say Suprabhat. Suprabhat. For later in the day, you can say Shubh Sandhya. Shubh Sandhya. But for most of the time, you can just say Namaste and not worry about it. As we learned in this lesson, Namaste can mean both hello and goodbye. However, this is not the only way of saying goodbye in Hindi.
A parting expression that we can use for all occasions is फिर मिलेंगे, which means see you. फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे. The first word फिर means again and the second word मिलेंगे means we will meet. Let's look at one more expression. Alvida. Alvida is an Urdu word which means goodbye. Alvida. It is an appropriate choice when parting for a long time. Now, it's time for Prerna's points. The easiest way of saying your goodbyes in Hindi is by using Namaste. Take a slight bow with folded hands and say Namaste. Namaste and Namaskar both come from Sanskrit and mean something like I honor you or I bow to you. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. शहर के दक्षिण की तरफ. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. 8वीं पंक्ति, सीट C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the 3rd Sunday of every month. सार्वजनिक छुट्टियों हर महीने के तीसरे रविवार को. You are at a bus terminal where you're waiting for the 3:01 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "The 3:01 bus does not stop here." 301 नंबर बस यहाँ नहीं रुकती.
You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank? Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. पूर्व, Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. Hello everyone, welcome back to HindiPod101.com, the easiest, smartest and quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and today we are going to learn the most commonly used words in Hindi. Namaste. Hello. So our first word is Namaste. So this is a very courteous way of saying hello in Hindi. So whenever we want to greet someone in Hindi, we just fold our hands and say Namaste, which means hello in English. Suprabhat. Good morning. Moving on to the next word, which is Suprabhat, which means good morning. Shubh Ratri. Good night. Shubh Ratri, which means good night. Shubh Sandhya. Good evening. Shubh Sandhya, which means good evening. आपका नाम क्या है? What is your name? Moving on to the next set of words, which is आपका नाम क्या है, which means in English, what is your name? मैं हूँ. I am. So to reply to this question, we can always answer like मेरा नाम अनुज खुराना है. My name is Anuj Khurana. आपसे मिलकर खुशी हुई. Nice to meet you. आपको मिलके खुशी हुई. Nice to meet you. आप कैसे हैं? How are you? So our next set of words is asking someone that how they are doing. आप कैसे हैं? How are you? जी मैं ठीक हूँ. और आप? I'm fine. Thanks. And you? So to reply to this question, we can always answer like मैं ठीक हूँ. I'm fine. Thank you. कृपया. Please. कृपया, which means please. Whenever we are requesting someone, we always use this word कृपया. कृपया आप मुझे अपना पेन दे दीजिए. Please give me your pen. So always remember, कृपया is a very courteous way of saying please. धन्यवाद. Thank you. Our next word is thank you. धन्यवाद. धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया. Thank you for inviting me here. कोई बात नहीं. You're welcome. कोई बात नहीं, which means you're welcome. So whenever someone is saying thank you to us, like धन्यवाद in Hindi, we can always address them like कोई बात नहीं. You're welcome. हाँ. Yes. So the next word is हाँ, which means yes. हाँ मेरा नाम अनुज खुराना है. Yes, my name is Anuj Khurana. नहीं. No. So opposite to yes, the next word is no. नहीं. नहीं, मैं आज dinner नहीं खाऊंगा. No, I'm not going to have dinner tonight. ठीक है. Okay. ठीक है, which means okay in English. ठीक है, आज आप थोड़ा late आ जाना. Okay, you can come a bit late today. मुझे माफ कीजिएगा. Excuse me.
मुझे माफ कीजिएगा, which means excuse me. मुझे क्षमा करें. I'm sorry. मुझे क्षमा करें, which means please forgive me. मुझे क्षमा करें, आज मैं थोड़ा लेट हूँ. Please forgive me, I'm a bit late today. शौचालय कहाँ है? Where is the restroom? शौचालय कहाँ है? Which means where is the restroom? 1 मिनट रुकिए. Wait a moment. Our next set of words are एक मिनट रुकिए, which means wait a moment. एक मिनट रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ. Wait a moment, I'll be back. यह कितने का है? How much is this? यह कितना है? How much is it? It is like asking someone like, how much is this? How much is this number? यह कितना है? क्या मुझे चेक मिल सकता है? Can I get the check please? क्या मुझे चेक मिल सकता है? Which means, can I get the check please? बधाई हो. Congratulations. बधाई हो, which means congratulations. बधाई हो, आप हिंदी पॉड 101 से हिंदी सीख रहे हैं. Congratulations, you are learning Hindi from hindipod101.com. फिर मिलेंगे. See you later. फिर मिलेंगे, which means see you again. अपना ध्यान रखिएगा. Take care. Coming to the end of this lesson, so our next word is अपना ध्यान रखिएगा, which means take care. अलविदा. Goodbye. So the last word for this lesson is अलविदा, goodbye. अलविदा, हम जल्द ही मिलेंगे. Goodbye, we're gonna meet again. So that's all from today's lesson, and I hope you all enjoyed learning these new words, which are quite easy, and these are the words which are most commonly used in Hindi. I hope you liked our video, and if you did so, please click on the like button and subscribe to our channel, which is hindipod101.com. Stay tuned for more videos. I'll be back with few more Hindi lessons to make you learn Hindi while you're sitting at home. Goodbye, take care. Namaste, welcome to hindipod101.com, the easiest, smartest and the quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and I'm back with yet another Hindi lesson with new Hindi words. Today we are going to discuss about 10 phrases, 10 sentences which you can use to amaze a native speaker. So let's begin. धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में एक देशी वक्ता नहीं हूँ. Thank you, but actually I am not a native speaker. धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में एक देशी वक्ता नहीं हूँ. Thank you, but actually I am not a native speaker. मैं 10 सालों से हिंदी सीख रहा हूँ. I've been learning Hindi for 10 years now. मैं 10 सालों से हिंदी सीख रहा हूँ. I've been learning Hindi for 10 years now. मैं 3 सालों में एक देशी वक्ता की तरह हिंदी बोल पाऊंगा. I'll be able to speak Hindi like a native speaker in 3 years. मैं 3 सालों में एक देशी वक्ता की तरह हिंदी बोल पाऊंगा. I'll be able to speak Hindi like a native speaker in 3 years. Well, that's quite a good speed if you can speak like a native speaker in 3 years. Nothing like that. मैं खुद से ही हिंदी सीख रहा हूँ. I'm learning Hindi by my own. मैं खुद से ही हिंदी सीख रहा हूँ. I'm learning Hindi by my own. Well, you have hindipod101.com. You can learn Hindi quite quickly from there too. मैं उपशीर्षकों के बिना भी एक हिंदी फिल्म देख सकता हूँ. I can watch a Hindi film without the subtitles. मैं उपशीर्षकों के बिना भी एक हिंदी फिल्म देख सकता हूँ. I can watch a Hindi film without the subtitles. Well, I'm sure you all must be aware of Bollywood. These films are a lot of drama, a lot of romance, and if you're good at Hindi, you can enjoy Bollywood films. आपने जो कहा मैं पूरा समझ गया हूँ. I've understood everything you have said.
आपने जो कहा मैं पूरा समझ गया हूं. I've understood everything you have said. मैं लगभग 50 नए हिंदी के शब्द एक दिन में याद कर सकता हूं. I can learn 50 new Hindi words in a day. मैं लगभग 50 नए हिंदी के शब्द एक दिन में याद कर सकता हूं. I can learn 50 new Hindi words in a day. Well, trust me, if you can do so, you can quickly become a fluent Hindi speaker. हिंदी के अलावा मैं और भी कई भाषाओं में बात कर सकता हूं. I can speak several other languages apart from Hindi. हिंदी के अलावा मैं और भी कई भाषाओं में बात कर सकता हूं. I can speak several other languages apart from Hindi. Well, if you can do so, trust me, you are very talented because I can just speak Hindi and English. मैं खुद हिंदी पढ़ और लिख सकता हूं. I can write and read Hindi on my own. Our next sentence is मैं खुद हिंदी पढ़ और लिख सकता हूं. I can write and read Hindi on my own. मैं कभी कभी हिंदी कविता लिखता हूं. At times I write Hindi poems. Well, if you're doing that, it's just amazing. If you're learning a language and writing poems and that, nothing better than that. मैं कभी कभी हिंदी कविता लिखता हूं. At times I write Hindi poems. Well, that's all from today's lesson. I hope you enjoyed a video lesson. If you have any kind of suggestions, any kind of feedback, you can write them in the comment section. And if you liked the video, please click on the like button. You can also subscribe to our channel, which is Hindi Pod 101. For more such kind of Hindi lessons, you can visit our website, which is www.hindipod101.com. I'll be back with more Hindi lessons. Till then, stay tuned. Goodbye. एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है. वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए. बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है. दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है. अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए. इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है. हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी. अब दाएं की चार्ट को देखिए. दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे. अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई. हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता. मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे. वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है. वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए. बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है. दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है. अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए. इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है. हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी. अब दाएं की चार्ट को देखिए. दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे. अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई. हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता. मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे.
एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है, और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए, हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें।
फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुँचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज़ बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुँचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। एक महिला फ़ोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज़्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? एक महिला फ़ोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज़्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा,
तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है, क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना। यही सबसे जरूरी है। अच्छा। और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है, क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना। यही सबसे जरूरी है। अच्छा। और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। Hello everyone, welcome back to HindiPod101.com, the easiest, smartest and quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and in today's topic we are going to learn how to pronounce the 10 hardest words in Hindi. Yes, so today I'm going to tell you how you can pronounce these hard words, and don't worry, I'm going to make it easier for you. Sundar, beautiful. So let's begin with our first word, which is Sundar. Sundar, which means beautiful. नेहा एक बहुत ही सुंदर लड़की है. नेहा is a very beautiful girl. Bhagwan, God. Our next word is Bhagwan. Bhagwan. Bhagwan, which means God. मुझे भगवान में बहुत भरोसा है. I truly believe in God. Bhagwan, which means God. Rajniti, politics. Rajniti, which means politics. मेरा राजनीति में कोई भी रुझान नहीं है. I have no interest in politics. Rajniti. Rajniti. Bhrashtachar, corruption. Okay, so the next word is quite interesting. It is bhrashtachar. Okay, I'll divide it down for you. It's bhrashtachar. Bhrashtachar. Bhrashtachar, which means corruption. सब लोग चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए.
Everyone wants the corruption should end from the country. भ्रष्टाचार. समझौता, agreement. समझौता, which means an agreement. क्या आप समझौता करना चाहेंगे? Would you like to make an agreement? समझौता, which means an agreement. मंत्रालय, ministry. Okay, so another word is mantralaya. Mantralaya, which means ministry. मंत्रालय के पास आज बहुत भीड़ है. It is very crowded near the ministry. I'll repeat this word for you. It is mantralaya, which means ministry. विदेश, foreign. Our next word is videsh. Videsh, which means foreign. विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है. It is amended to have a passport to go to a foreign country. राजधानी, capital. Next word is rajdhani. Rajdhani, which means capital. भारत की राजधानी दिल्ली है. Delhi is the capital of India. स्वतंत्रता, independence. So another word here is swatantrata. Okay, don't worry, I'll divide it down for you. Swatantrata, which means independence. भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. India celebrates its Independence Day on 15th of August. Swatantrata. पढ़ाई, studies. Alright, so coming towards the end of this lesson, our last word is padhai, which means studies. Padhai, studies. रीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी है. रीमा is very good at studies. Padhai, studies. Alright everyone, so that's the end of this lesson. I know these words were quite tough, but I hope I made it a bit easier for you, and I'm sure you're gonna learn them quickly and very easily. If you all liked our video, please click on the like button and please share this video with all of your friends, and please subscribe to our channel, which is hindipod101.com. You can also visit to our website, which is www.hindipod101.com. I will come back with few more Hindi lessons. Till then, stay tuned. Goodbye. Take care. एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं. वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है. ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं. ओशन होटल बीच के पास है. $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा. पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है. मैं रहने पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता. लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है. सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं. यह बीच और शहर के मध्य में है. इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है. काफ़ी अच्छा है. ओह रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है. ओह, वह मैंने नहीं देखा. तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है. कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है. ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं. ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है. उफ,
फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। वे कौन सा होटल चुनेंगे? एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं। वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है। इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफ़ी अच्छा है। ओह रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ़, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को 4 वर्गों में अलग कर देते हैं। 4 लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे। इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा हम एक सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। 2-2 टेबलों की 4 पंक्तियां बनाओ। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को 4 वर्गों में अलग कर देते हैं। 4 लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे। इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा हम एक सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। 2-2 टेबलों की 4 पंक्तियां बनाओ। एक आदमी और एक औरत कार्यालय की आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? आपको हमारे कार्यालय की आपूर्ति वस्तुओं के स्टॉक की जांच करके महीने में एक बार ऑर्डर देना है।
चलो इस चेकलिस्ट के साथ इस बार मिलकर जांच करते हैं। धन्यवाद। तो चलो कागजों से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है केवल एक बॉक्स ही रह गया है। हम हर दिन कागज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चलो और 2 बॉक्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्रिंटर में रंगीन स्याही खत्म है। क्या हमें उसका ऑर्डर देना चाहिए? ओह, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रंगीन दस्तावेज़ प्रिंट नहीं करते। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, लगता है कि सफ़ेद बोर्ड के कुछ मार्कर में स्याही कम है। हाँ, उनको बदलने की ज़रूरत है। हम 5 मार्कर के सेट का ऑर्डर करते हैं तो हमें छूट मिलती है, तो चलो वैसा करते हैं। ठीक है। ओह, क्या हम माउस ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे माउस की प्रतिक्रिया धीमी लग रही है। मुझे लगता है बैटरी ख़त्म होने के कारण से ऐसा है। बैटरीज़ के स्टॉक की जांच करते हैं और अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो ऑर्डर करते हैं। ज़रूर। खैर, हमारे पास यहाँ 3 बैटरीज हैं। आप अपने माउस के लिए यहाँ से 2 ले लीजिए और बदले में बैटरीज़ का एक 6 का पैक खरीद लेना। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? एक आदमी और एक औरत कार्यालय की आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? आपको हमारे कार्यालय की आपूर्ति वस्तुओं के स्टॉक की जांच करके महीने में एक बार ऑर्डर देना है। चलो इस चेकलिस्ट के साथ इस बार मिलकर जांच करते हैं। धन्यवाद। तो चलो कागजों से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है केवल एक बॉक्स ही रह गया है। हम हर दिन कागज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चलो और 2 बॉक्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्रिंटर में रंगीन स्याही खत्म है। क्या हमें उसका ऑर्डर देना चाहिए? ओह, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रंगीन दस्तावेज़ प्रिंट नहीं करते। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, लगता है कि सफ़ेद बोर्ड के कुछ मार्कर में स्याही कम है। हाँ, उनको बदलने की ज़रूरत है। हम 5 मार्कर के सेट का ऑर्डर करते हैं तो हमें छूट मिलती है, तो चलो वैसा करते हैं। ठीक है। ओह, क्या हम माउस ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे माउस की प्रतिक्रिया धीमी लग रही है। मुझे लगता है बैटरी ख़त्म होने के कारण से ऐसा है। बैटरीज़ के स्टॉक की जांच करते हैं और अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो ऑर्डर करते हैं। ज़रूर। खैर, हमारे पास यहाँ 3 बैटरीज हैं। आप अपने माउस के लिए यहाँ से 2 ले लीजिए और बदले में बैटरीज़ का एक 6 का पैक खरीद लेना। एक पति पत्नी घरों के डिज़ाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है। यह जाकर देख आएं। एक मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है। कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। एक मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीज़ें सही है ना? अलमारी भी काफ़ी बड़ी है। ये देखने चलते हैं। ठीक है। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? एक पति पत्नी घरों के डिज़ाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है। यह जाकर देख आएं। एक मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है। कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। एक मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीज़ें सही है ना? अलमारी भी काफ़ी बड़ी है। ये देखने चलते हैं। ठीक है। एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, रिची के नाम से। हाँ जी, रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक।
अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, रिची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज़्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफ़ी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिज़ाइन थोड़ा सादा है तो ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए, कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूँगी। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज़्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफ़ी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिज़ाइन थोड़ा सादा है तो ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए, कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूँगी। Namaste. Welcome back to HindiPod101.com, the easiest, smartest, and the quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana, and I'm back with yet another Hindi lesson for you all. So today we are going to discuss 10 sentences which you never want to hear. So let's begin. आपका एक बाल सफेद है. You have a grey hair. आपका एक बाल सफेद है. You have a grey hair. Well, there's nothing scary about this because with age, with the passage of time, they're gonna come. So there's nothing to fear about grey hair, I believe. मैंने बोला था. I told you. मैंने बोला था. मैंने बोला था. Which means I told you. So this can be taken into the context that I've already warned you not to do something and unfortunately some bad thing has happened. So it can be taken in that context. हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं. You are fired. Now the next sentence is हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, which means you are fired. This is scary now. I hope no one gets to hear this sentence from anyone. I wish everyone all the best for that. तुम्हारी नहीं, मेरी वजह से. It's not because of you, it's because of me. Moving on to the next sentence, which is तुम्हारी नहीं, मेरी वजह से. It's not because of you, it's because of me. अपना बायोडाटा भेजने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये पोजीशन अब भर चुकी है.
Thank you so much for sending your resume. Unfortunately, this position has been filled. अपना बायोडाटा भेजने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये पोजीशन अब भर चुकी है. Thank you so much for sending your resume. Unfortunately, this position has been filled. But never mind, there are many other options available for you, so just keep applying. Don't feel sad about it. हमें दूसरों का साथ ढूंढना चाहिए. We should see other people. Moving on to the next sentence, which is हमें दूसरों का साथ ढूंढना चाहिए. We should see other people. हमें दूसरों का साथ ढूंढना चाहिए. अभी मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं. As of now, I do not have your money. So our next sentence is अभी मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं. As of now, I do not have your money. Well, we amongst friends keep on giving money to each other and I use this sentence a lot. माफ कीजिए, मैं भूल गया. Forgive me, I forgot. So next sentence is माफ कीजिए, मैं भूल गया. Forgive me, I forgot. Just imagine you have asked something from your friends and he's showing up to you and he didn't get the stuff which you asked for. So at that time, people use this sentence a lot. माफ कीजिए, मैं भूल गया. यह पूरा गलत है. This is all wrong. यह पूरा गलत है. Which means this is all wrong. Just imagine you have put all your hard work to finish some project and when you're showing it up, the person is saying that it's completely wrong. यह पूरा गलत है. आगे सड़क बंद है, आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा. The road is closed, you have to go around. आगे सड़क बंद है, आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा. The road is closed, you have to go around. Just imagine you're getting late for some meeting or maybe for a party and you get to hear this. So that's the end of this lesson. So these were the 10 sentences which you never want to hear. If you liked our video, please click on the like button. You can also leave your valuable feedback, any suggestions in the comment section. Also, please subscribe to our channel which is Hindi Pod 101 and you can also visit our website which is www.hindipod101.com. I'll be back with more Hindi lessons. Till then, stay tuned. Goodbye. Take care. एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं. सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो. बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है. नीला लिफाफा, ठीक है. लेकिन आपके मेज़ पे 2 नीले लिफाफे हैं. ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है. हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं. लाल सील वाला, ठीक है. शाबाश. कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले. तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफ़ी बार मिली हूँ और बात की है. ठीक है. और क्या तुम दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर. सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं. सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो. बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है. नीला लिफाफा, ठीक है. लेकिन आपके मेज़ पे 2 नीले लिफाफे हैं. ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है. हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं. लाल सील वाला, ठीक है. शाबाश.
कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले। तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफ़ी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है। और क्या तुम दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर। एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। एक आदमी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? माफ़ कीजिए, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई फ्लोर प्लान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या ये एक आदमी के लिए है? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा।
मुझे एक बैठक का कमरा, शयन कक्ष और एक पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें 2 कमरे हैं, साथ में एक बैठक का कमरा है। यह कुछ शोरगुल हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़े रोड के पास है। ठीक है, मैं अक्सर घर पे काम करता हूँ, तो मुझे एक शांत जगह चाहिए और मैं बैठक का कमरा चकोर चाहता हूँ। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये स्टेशन से कुछ दूरी पे है, लेकिन शांत आवासीय क्षेत्र में है। इसमें 2 कमरे और एक बैठक का कमरा है, लेकिन एक कमरा थोड़ा सा छोटा है। हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये वाला काफ़ी रहेगा। हम आपको एक दूसरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं, जिसमें 2 बड़े कमरे हैं, लेकिन वो स्टेशन से काफ़ी दूर है। नहीं, आपका धन्यवाद। मैं दूसरे वाला देखना चाहूँगा, जो आपने दिखाया था। वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? एक आदमी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? माफ़ कीजिए, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट ढूँढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई फ्लोर प्लान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या ये एक आदमी के लिए है? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मुझे एक बैठक का कमरा, शयन कक्ष और एक पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें 2 कमरे हैं, साथ में एक बैठक का कमरा है। यह कुछ शोरगुल हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़े रोड के पास है। ठीक है, मैं अक्सर घर पे काम करता हूँ, तो मुझे एक शांत जगह चाहिए और मैं बैठक का कमरा चकोर चाहता हूँ। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये स्टेशन से कुछ दूरी पे है, लेकिन शांत आवासीय क्षेत्र में है। इसमें 2 कमरे और एक बैठक का कमरा है, लेकिन एक कमरा थोड़ा सा छोटा है। हम्म, हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये वाला काफ़ी रहेगा। हम आपको एक दूसरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं, जिसमें 2 बड़े कमरे हैं, लेकिन वो स्टेशन से काफ़ी दूर है। नहीं, आपका धन्यवाद। मैं दूसरे वाला देखना चाहूँगा, जो आपने दिखाया था। एक औरत एक बर्थडे केक ऑर्डर कर रही है। वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? नमस्ते, मैं अपने बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस तरह का केक खरीदना पसंद करेंगी? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है, तो मुझे लगता है चॉकलेट केक सही रहेगा। क्या आप उस पर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे? बिल्कुल। हमारे पास गोल व चकोर केक है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगी? कृपया एक गोल वाला। ठीक है। आपकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? वह 12 साल की हो जाएगी। ठीक है। फिर हम 12 मोमबत्तियां तैयार रखेंगे। आप कोई मैसेज लिखना चाहेंगी? हाँ जी, कृपया हैप्पी बर्थडे लिखें। ठीक है। क्या आप चाहती हैं वो गुलाबी रंग में लिखा हो? यदि हाँ, तो हम केक को सफ़ेद प्लेट पे रखेंगे। नहीं तो हम सफ़ेद रंग में लिखकर केक को गुलाबी प्लेट पे रखेंगे। कृपया उसे गुलाबी रंग में लिखकर सफ़ेद प्लेट पे रखें। वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? एक औरत एक बर्थडे केक ऑर्डर कर रही है। वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? नमस्ते, मैं अपने बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस तरह का केक खरीदना पसंद करेंगी? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है, तो मुझे लगता है चॉकलेट केक सही रहेगा। क्या आप उस पर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे? बिल्कुल। हमारे पास गोल व चकोर केक है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगी? कृपया एक गोल वाला। ठीक है। आपकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? वह 12 साल की हो जाएगी। ठीक है। फिर हम 12 मोमबत्तियां तैयार रखेंगे। आप कोई मैसेज लिखना चाहेंगी? हाँ जी, कृपया हैप्पी बर्थडे लिखें। ठीक है। क्या आप चाहती हैं वो गुलाबी रंग में लिखा हो? यदि हाँ, तो हम केक को सफ़ेद प्लेट पे रखेंगे। नहीं तो
हम सफ़ेद रंग में लिखकर केक को गुलाबी प्लेट पे रखेंगे। कृपया उसे गुलाबी रंग में लिखकर सफ़ेद प्लेट पे रखें। एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। वो घर कब बदलेंगे? मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था। मैं ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहती। मैं सहमत हूँ। यह कंपनी कुछ छूट देती है, जैसे 10% अगर तुम 1 महीना पहले बुकिंग करो तो। 1 महीने पहले। इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें 15 दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा। हाँ, और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार्य दिवस। ठीक है, सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है, तो शुक्रवार सही रहेगा, क्योंकि सप्तांत में हम घर में चीजें लगा लेंगे। हाँ। ओ रुको, वो बोल रहे हैं 15% छूट सोमवार से वीरवार तक और 5% शुक्रवार को। ओह, तुम क्या करना चाहती हो? चलो, जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं। तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी। वो घर कब बदलेंगे? एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। वो घर कब बदलेंगे? मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था। मैं ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहती। मैं सहमत हूँ। यह कंपनी कुछ छूट देती है, जैसे 10% अगर तुम 1 महीना पहले बुकिंग करो तो। 1 महीने पहले। इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें 15 दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा। हाँ, और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार्य दिवस। ठीक है, सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है, तो शुक्रवार सही रहेगा, क्योंकि सप्तांत में हम घर में चीजें लगा लेंगे। हाँ। ओ रुको, वो बोल रहे हैं 15% छूट सोमवार से वीरवार तक और 5% शुक्रवार को। ओह, तुम क्या करना चाहती हो? चलो, जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं। तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी। Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.